Hello viewers, today I am going to discuss the three types of education which are formal education, informal education and non-formal education. Before going to discuss, hello viewers, welcome to my YouTube channel Bibori Classes. Today we are going to discuss the mainly three types of education. First of all, we are going to discuss now about formal education. What is formal education? Formal education is provided in an educational institution in an organized way. Educational institution like school, college, universities, जहाँ पर फॉर्मली स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं अंडर फिक्स कोर्स और फिक्स टाइम टेबल। यहाँ पर क्वालिफाइड टीचर्स को ही अपॉइंट करता है क्योंकि क्वालिफाइड टीचर्स ही स्टूडेंट्स को प्रॉपर नॉलेज प्रोवाइड कर सकते हैं। और फॉर्मल एजुकेशन में फॉर्मल रूल्स मेथड्स एंड डिसिप्लिन्स को मेंटेन करवाते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स इवैल्यूएशंस आर डन ऑन द बेसिस ऑफ एग्जामिनेशन। दैट मीन्स स्टूडेंट्स का जो इवैल्यूएशन होता है वो थ्रू एग्जामिनेशन के द्वारा ही होता है। आफ्टर पासिंग द एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट्स डिग्रीज एंड डिप्लोमास आर अवार्डेड। फॉर्मल एजुकेशन में कहा गया है कि जब स्टूडेंट्स पास करते हैं तब उन लोगों को सर्टिफिकेट डिग्रीज एंड डिप्लोमास प्रोवाइड करते हैं। आवर एजुकेशनल लाइफ स्टार्टेड फ्रॉम pre-primary to master degree, like pre-primary, lower primary, higher primary, secondary, higher secondary, bachelor's degree and master's degree. As for example, you visited to the principal office formally to give him a application letter. Here I have provided two pictures where both the teacher is teaching to their children. Now, informal education. Informal education is more comprehensive than formal education. It is not pre-planned. Informal education is not pre-planned. It is the type of education which the child gets while moving and living in the community with other persons. It has been said that the child can get informal education while moving and living in the community or society from other persons. It is casual and gained through daily experiences and activity. यहाँ पर जो एक्सपीरियंस एंड एक्टिविटीज़ करते हैं उसी तौर पर इनफॉर्मल एजुकेशन भी गेन कर सकते हैं। इनफॉर्मल एजुकेशन का एजेंसीज है होम, रिलीजियस एंड सोशल इंस्टीट्यूशंस, रेडियो, न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, इन सब से हम लोग इनफॉर्मल एजुकेशन ले सकते हैं। इनफॉर्मल एजुकेशन में कोई भी रूल्स डिसिप्लिन कुछ भी फॉलो नहीं करते हैं। यहाँ पर इनफॉर्मल एजुकेशन में स्टूडेंट्स का इवैल्यूएशन कैसा होता है? बाय ऑब्जर्विंग देयर सोशल एडजस्टमेंट। यहाँ पर कोई डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट कुछ भी प्रोवाइड नहीं करवाते हैं। ये बर्ड्स से मृत्यु तक इनफॉर्मल एजुकेशन गेन कर सकता है। हियर आई हैव प्रोवाइडेड थ्री पिक्चर्स ऑफ इनफॉर्मल एजुकेशन। हियर द फर्स्ट पिक्चर defines that the man is scrolling his tablet and gaining information from social networking sites like Facebook, Twitter, YouTube, etc. And the second picture defines that the mother is telling a story to their children, and the third picture says that from newspaper you can gain lot of information what has been going on in the world. Now the last types of education, that is non-formal education. Non-formal education is organized and pre-planned but not strictly formal. Non-formal education में कहा गया है कि ये organized and pre-planned है लेकिन strictly formal नहीं है. It aims at all-round development of man. All-round development means development of a whole personality. It is learner dominated where all efforts are being made it easily available to the learner with economy of time and effort. That means in non-formal education the materials are easily available
and also there is no any regular classes that you have to attend, and also you can save a lots of time and effort. Like it can be said that non-formal education is done from a open school, distance education, and also like correspondence education, from where non-formal education can be attained. Also, non-formal education is continuous and flexible. It is flexible in the sense of entry and exit, re-entry and re-exit, curriculum and maintenance of discipline, etc. That means in non-formal education, classes are organized per week like Sunday, but it is not mandatory that you must go to the class. Also, there is no strict control of the teacher. Non-formal education में टीचर का कोई स्ट्रिक्ट कंट्रोल नहीं होता है, एंड इट इज़ ओपन टू ऑल पीपल ऑफ ऑल द सोसाइटी वेदर रिच और पोर, यंग और ओल्ड. Non-formal education में students who cannot go to school in a particular time, they can admit at any age. Also, it is open for all, whether rich or poor, young or old. At the end of the distance course, students are given certificates and degrees on the basis of evaluation. I have given 3 pictures of non-formal education. The first picture denotes that materials can be accessed from home itself, and the second one is an Open University of Indira Gandhi and National Open University, and the third one is IDOL of Guwahati University, which means IDOL, Institute of Distance and Open Learning. Now, the difference between formal and informal education. As I have explained you clearly that formal education is planned with a particular end in view. फॉर्मल एजुकेशन प्लान होता है, इनफॉर्मल एजुकेशन हम लोग कहीं से भी सीख सकते हैं. फॉर्मल एजुकेशन कहाँ प्रोवाइड करवाते हैं, ये स्कूल एंड कॉलेजेस में, एंड इनफॉर्मल एजुकेशन ये कहीं पर से भी हम लोग एजुकेशन गेन कर सकते हैं. फॉर्मल एजुकेशन फिक्स करिकुलम होता है, इनफॉर्मल एजुकेशन ये फिक्स करिकुलम नहीं होता है, ये लाइफ से और एक्सपीरियंस से हम लोग गेन कर सकते हैं. फॉर्मल एजुकेशन हैज़ रिजिड टाइम टेबल, इसका फिक्स टाइम टेबल होता है, और इनफॉर्मल एजुकेशन में कोई टाइम टेबल नहीं होता है. और फॉर्मल एजुकेशन में क्वालिफाइड एंड ट्रेन टीचर होता है, एंड इनफॉर्मल एजुकेशन में क्वालिफाइड टीचर एज वेल एज ट्रेन टीचर नहीं होता है. फॉर्मल एजुकेशन में डिसिप्लिन स्ट्रिक्ट होता है एज वेल एज फ्लेक्सिबल, और इनफॉर्मल एजुकेशन में क्या होता है, सेल्फ डिसिप्लिन होता है, मतलब खुद से ही हम लोगों को फॉलो करना होता है सोशल रूल्स को. नंबर 7, फॉर्मल एजुकेशन हैज़ फिक्स रूल्स एंड रेगुलेशन. फॉर्मल एजुकेशन में फिक्स रूल्स एंड रेगुलेशन होता है, एंड इनफॉर्मल एजुकेशन में कोई फिक्स रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होता है. एट लास्ट, फॉर्मल एजुकेशन में स्टूडेंट्स इवैल्यूएशन इज़ डन ऑन द बेसिस ऑफ एग्जामिनेशन, और आफ्टर पासिंग एग्जामिनेशन यहाँ पर डिग्री और डिप्लोमा प्रोवाइड करते हैं. एंड इनफॉर्मल एजुकेशन में नो सर्टिफिकेट एंड डिग्रीज आर अवार्डेड, और यहाँ का इवैल्यूएशन होता है कि इज डन बाय ऑब्जर्विंग सोशल एडजस्टमेंट. नाउ द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन. As formal education I have explained clearly, let's see the differences between formal and non-formal. Formal education has fixed concept as I have explained before, and non-formal education has diversified curriculum responsive to the learner's need. Formal education में time limit होता है, non-formal education is a lifelong process. The sources of education are school, college, university and other institutions से formal education gain कर सकते हैं और ले सकते हैं. And non-formal education में open school, distance education, part time education से ले जा सकते हैं. It is formal education में it is imposed by the teacher on the student, and non-formal education encourages self-learning. Formal education has rigid curriculum, strict discipline and fixed goals of education. And non-formal education has flexible curriculum, inner discipline and self-awareness program. और फॉर्मल एजुकेशन में जैसे कि पता है आप लोगों को सर्टिफिकेट्स, डिग्रीज, डिप्लोमा प्रोवाइड करते हैं, एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन में भी सर्टिफिकेट, डिग्री, डिप्लोमा प्रोवाइड करते हैं, बट ऑन द बेसिस ऑफ इवैल्यूएशन. एंड फॉर्मल एजुकेशन हैज़ एज लिमिट, एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन हैज़ नो एज लिमिट.
And formal education does not utilize all the human resources, but non-formal education में क्या करते हैं? Based on the principle of maximum utilization of human potential. That means depend on yourself. And if characteristics are being asked in the examination, you can write from the differences from formal, informal, formal, non-formal. Okay, that's all for today. See you in the next video. Thank you.